Hey guys, what's going on? Welcome back to part 9 of Final Fantasy 16. लास्ट पार्ट में हमें और जिल ने ये प्लान बनाया कि हम लोग फिनिक्स गेट विज़िट करेंगे। तो मैं और वो फिनिक्स गेट विज़िट करते हैं जिल के साथ, और वहाँ पे हमें वो हुडेड आदमी फिर से दिखता है, लेकिन क्लाइव को ऐसा लगता है कि वो हुड में खुद अपने आप को ही देख रहा है। जैसे रिफ्लेक्शन होती है, लेकिन बैड वंस। और क्लाइव वहाँ पे जाके ये एक्सेप्ट करता है कि उससे मिस्टेक हुई है और उसी ने ही जोशुआ को मारा है, और वो इफ़रीत के हाथों में खेल रहा है। इफ़रीत उसे कंट्रोल कर रहा है, लेकिन वो अब और उसके कंट्रोल में नहीं रहना चाहता, बल्कि वो इफ़रीत से लड़कर उससे कंट्रोल को करता है। और जब हम ये सब लड़ाई और एक्सेप्टेंस के बाद वापस रोजेरिया विलेज लौटते हैं, तो वहाँ पे कुबका के सोल्जर्स ने ऑलरेडी विलेज पे और लोगों को अटैक करके ख़त्म कर दिया होता है। तो क्लेव वापस गुस्से में उनसे बदला लेना चाहता है, और वो वापस सिड से जाके हाथ मिला लेता है। और सिड उसे प्लान बताता है कि मदर क्रिस्टल ही इस जगह की तबाही का जिम्मेदार है, और जो क्लेव की माँ होती है नबेला, उसी ने ही ये एम्प्रेस के नाम से होती है, उसने ये सोल्जर्स भेजे होते हैं। सो विलेज पर अटैक और विलेज पे जो इनोसेंट पीपल हैं उनकी मरने की भी जो जिम्मेदार है वो एनाबेला ही होती है। और क्लेव सिड के इस प्लान का हिस्सा बन के वो और सिड दोनों इस इम्प्रेस और इनके खिलाफ जंग की तैयारी करते हैं। सो यह पिछले एपिसोड में हमने इतना ही करा था। अभी देखें आगे और एक्सप्लोर करने में हमें और क्या पता चलता है। सो without further ado, let's dive in and explore more. First travel भी available नहीं Weren't है। expecting any new branded until the new moon. You don't think he's a deserter, do you? तो बेसिकली लास्ट पार्ट में हम तीनों में जिल और सिड हम प्लान बनाते हैं, और इसके बाद हम लोग सेपरेट होकर तकसीम हो जाते हैं। हर एक जिम्मेदारी सौंपी जाती है। और क्या हम सही आए हुए हैं? हाँ है तो सही, लेकिन ओके सिड यहाँ पे ऑलरेडी Any मौजूद trouble है। on the way? None worth mentioning. As I was telling Jill, it's worse than I thought. The capital's crawling with soldiers. And here I am, the deserter come home. Which is why we'll be taking the back door. सिड मास्टरमाइंड है इस प्लान का गैस, बस ये बात याद रखना। ये बहुत ख़ास क्रिस्टल, मदर क्रिस्टल। ओके, क्या हम वापस द डैम के पास आ गए? प्लेजर हाउस, हाँ।
Cheer up, you two. Can't think of a safer place in the Empire than a... brothel. Really? Doesn't seem very private. Uh, So then, how do we proceed? We'll be using the glass gate. Tonight, just after sunset. Where the shards are loaded for transport. That is one of the most heavily guarded points in all of Sambrek. But not the most, which is a start. Besides, I know a shortcut straight to the heart. A shortcut. And how exactly did you come to know about this fatal chink in the Empire's armor? Let's just say I may have attempted something similar before. And may have ended up running for dear life after being discovered by Bahamut, but that's not important. Sid, if the mother crystals truly are the cause of the blight, If you wound me, Jill. what I'm trying to say is, if the powers that be know all of this, why do they sit idle and allow it to continue? In case you haven't noticed, the God-fearing people of this realm and their pious leaders care for but one thing, themselves. And they'll do whatever it takes to hold on to power. The rest of us are just a means to an end. The moment you raise your voice against them, you're decried as an outlaw, clapped in irons and slung in a cell to rot. An outlaw. Whoever controls the crystals controls the realm. But our kind can wield magic without them. To our rulers, we must seem the most convenient of tools. And the most dangerous. But what makes them think they have the right to use us? To leave us to die when our bodies are spent? Does a nobleman weep for a broken mug? A torn tunic? Our fate means nothing to them. No, this isn't a battle you can win with words. Believe me, I've tried, but nothing ever gets through. The world is simply not ready to listen. So to hell with talking. If they won't give us a say, we'll decide our fates another way. You can't blame a man for wanting to bring an end to all this, can you? I can't. But what of all the people you mean to rob of their comforts? Are you happy for them to call you outlaw? Sid the Outlaw. Ah, that'll do me. You might at least pretend to take this seriously. Have a little faith, Jill. Even if you don't think much of my choice of digs. If it means my deeds will be remembered, I'll gladly play the role of villain. But first, we have a gate to crash. And once we're in, there'll be no turning back. So you best make ready. The world won't save itself. और कहाँ पे है ये क्रिस्टल? ये रोजारिया, ये आपके फिनिक्स गेट। व्हाट द हेल? फिर कहाँ चले गए फिनिक्स गेट? लास्ट ये एपिसोड में हम लोगों ने फिनिक्स डिस्कवर किया था, इस जगह में बिल्कुल इस तरफ अवेलेबल था। फिर फिनिक्स गेट गुम है। ये क्या है? इस जगह में से क्या है? ओह, इतना बड़ा खड्डा। क्या मस्त नक्शा है इनका। ओके, करंटली हम लोग नॉर्थ रिज में हैं और हम अभी ट्रेवल करेंगे टू ड्रेक्स हेड। लेट्स travel there. You have reached a pivotal moment in the story. If you continue, you will not able to return. Yes, of course. शुरू करो, किस चीज़ का इंतज़ार है? Holy, इनके कैसल्स कितने बड़े बड़े हैं।
are not nearly enough men here. Then it's fortunate the city guard doesn't take sentry assignment as seriously as you do. This bodes well. I'll be a first. This may not be such a terrible plan after all. And what exactly is that supposed to mean? Only that your last secret shortcut was nowhere near as secret as you claimed. Yeah, but that's half the fun of it. Life's too short for perfect plans. You want a plan that'll keep you on your toes, stop you growing old and complacent. Worked for you, has it? Clive, my boy, even life's smallest challenges offer the opportunity to grow and to change. You must embrace these moments. Allow them to suffuse your heart with a deep sense of fulfillment. Narrowly escaping death at the hands of an enemy is not my idea of fulfillment. Something wrong? Not at all. Just wondering if the two of you had finished. Right. We make for the Mother Crystal's heart as planned. Destroy it and the whole thing should come tumbling down. And if the passage to the inner sanctum is guarded? Then we embrace the moment and use it to grow and change. मतलब ये कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते. Crystal curse. Okay. Come on, this way. Try to stay out of sight. Obviously. Don't worry, the passage is empty. नीचे सीढ़ी भी क्या है? एक मिनट में आता हूँ गैस. मैं इस डब्बे को तो लूट लूँ. 800 गिल. अच्छा है मैंने छोड़ा नहीं. All right, not quite empty. Let's get this over with. One single man from reaching the sanctum, so shut your gob and keep your eyes open. Okay. They're not from the garrison. I swear this passage. The enemy's upon us! Of course it did. Perfect plans, Clive. Perfect plans. Make it look easy. एक झटके में सबको टपका दिया. Where is said he is here? They never stood a chance. You're welcome. ये तारीफ कर रहे या तंज मार रहे? The main tunnel. That would be my guess. There are sentries everywhere. I hope ये सिड का शॉर्टकट हमें किसी मुसीबत में नहीं डाल देगा. लेकिन And all good things must come to an end. We might have a bit more company from now on. तो और एक बार मैं नोट कर लूँ कितने सोल्जर्स. ये एक तो इधर ही खड़ा हो. 1 2 3. खैर कौन सा मैं To arms! Summon the cannoneer! ये कौन आ रहा है?
फिर से यही This may be the moment I was talking about earlier. What have we here? More insects come to be squashed? You will find my mortar and I only too happy to oblige. We've a talker. Then let's shut him up. Too slow. Not this time. Do you feel that? Something in there. Ether. It's ether. Then we better make this quick. You know what to do, boy. Don't let them get away. Too slow. Give them all you've got, boys. Don't let them get away. Get them, boy. Why won't you die? that's a new one. Oh, bollocks. He's gonna Kashyyyk. Okay. Save your pity. We'll get none in return. There's nothing left of him but hatred and rage. Let's end his torment. This time. Get him, boys! Sick of talking! Give them all you've got, boys! This time. Too slow. इतना भी कुछ सख्त नहीं था जितना मैं समझ रहा था, जिस हिसाब से आ रहा था लग तो ऐसा रहता है जिससे सबको खा जाएगा. I'll never get used to that. The Kashyyyk or no, he was still a man. A man who drowned in ether. It's no way for anyone to go. Come on. Okay, चलो हम अब God, duties are death sentence in this place. कंटिन्यू करें अपना जर्नी. Sylvester Care. Breathe deep of the blessing, my friends. Who said being a dominant doesn't have its benefits?
Sid, this is an ether flood. There shouldn't be one here, should there? The workers couldn't survive this. Well, it wasn't here last time, I can tell you that. Which means we need to be quick. The ether won't hurt us, but I'd rather not find out what it's done to everyone else. Okay. ये I think इसके टॉक्सिक इफेक्ट शायद सेफ नहीं है किसी के लिए भी, लेकिन जैसे सिड ने कहा कि हमें ज़्यादा देर न रुकना है, ना ये पता करने की फ़ायदेमंद है या नहीं, जितना जल्दी हो सके इन एंड आउट. The miners. The guards. Too far gone. The ether's made monsters of them. All we can do now is put them out of their misery. Isabel said she thought the Empire might be planning to abandon the capital. Could this be why? That's more like it. Enough time waste. You said you... अच्छा ये सर्च से कि कौन कौन सा चाहिए ना एबिलिटीज. इसे अपग्रेड कर देता हूँ और ये क्या करते हैं, इसे अपग्रेड कर देता हूँ और इसे भी. और ये क्या आ गया, होल्ड दो इम्बस. ये सब मैंने खोले नहीं थे. ये अपग्रेड है, शायद अपग्रेड है यो. Summon a fairy wing that deals damage and can launch smaller enemies into the air. Call her Isabel. Never mind. If ever there was a reason to up sticks, an ether flood would be it. Fuck me, those guards at the gate. They weren't there to keep people out. They were there to keep the Akashic in. ये रास्ता गलत हो गया क्या, या हमें इस तरफ जाना है. अब कहीं इंस्टेंट जंप मार के गिर नहीं जाए. Doesn't look that far. Right. नहीं 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 नहीं, टूटे नहीं टूटे. Whoa. मुझे पता था ऐसे कुछ होने वाला है. Some help. Hold on! अच्छा बूढ़े आदमी की हेल्प कर दी. दिखता यंग है लेकिन है बूढ़ा. Not quite I mean, as mature. spry as I used to be. I'll take that as a thank you. Look on the bright side.
At least you won't get lost. सेट कभी नहीं मानेगा, कभी भी। वो किसी का नहीं मानते। ओली, यहाँ पे तो क्रिस्टल का पूरा एक शहर आबाद है। Some opponents will use the ability Warcry to invigorate themselves, enhancing their performance in battle. Look at the try to defeat them before they can deal too much. They'll fall like all the rest. ओके, अब किस तरफ जाना है? क्योंकि मैं वहाँ पे जाके देख लूँ कुछ रह तो नहीं गया। ये रह गया था ना। अच्छा ओके, होली ओके। नहीं, क्रिस्टल को डायरेक्टली यूज करते हैं या पहले इसको किसी मैकेनिज्म से गुजार के? लेकिन जिस तरह क्रिस्टल लोगों के हाथ में होता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग इसे डायरेक्टली यूज करते हैं बिना किसी मैकेनिज्म से या हीटिंग और किसी और प्रोसेस से गुजारे हुए। ऐसा लगता है जैसे आप किसी ऐसी कान में काम कर रहे हैं जिसमें एटॉमिक रिलेटेड। दरवाज़ा बंद है, रास्ता इस तरफ नहीं है, तो फिर किस तरफ है? ग्रेट। आई मीन क्रिस्टल्स का रेडिएशन इतना ज़्यादा है कि क्या इन सब कन्वर्ट कर दिए। अच्छा, तो मैं रेडिएशन के बारे में बात कर रहा था कि ये क्रिस्टल्स इतना अगर रेडिएशन है, इस कान से निकलने के बाद पर लोगों के हाथों में जब डायरेक्टली यूज़ करते हैं तब भी रेडिएशन रहता है क्या? नहीं। बाहर हमने लोगों के हाथों में डायरेक्ट यूज होते। क्या कर रहे भाई?
boy. Is that it? So guys, मैं ये पूछ रहा था, अगर इसमें इतनी रेडिएशन है तो बाहर की दुनिया में लोग तो इसे डायरेक्टली हाथ में लेकर देखो, जिस जग में ग्लास में पता नहीं आग जलाते वक्त कितनी चीज़ों में यूज़ करे तो उनको भी क्या इसका असर नेगेटिव असर पड़ता है, क्योंकि ज़मीन पे तो जैसा सिड ने कहा था कि ज़मीन की सोर्सेज को यूज़ कर रहे और उससे बिल्कुल खुश्क कर दिए। सो आई डोंट नो कि क्रिस्टल कैसे काम करता है। यहाँ पे तो ये इतना टॉक्सिसिटी और रेडिएशन शो कर रहा है, लेकिन बाहर का पता नहीं। with something a little more sturdy. On the count of 3. What happened to 2? Ask 1. Once more. Aye, seeing as you're trying now. As if that was going to keep us out. वैसे गाइस ये एनिमेशन कितना कूल है, जैसे जोशुआ ने यूज़ किया था फिनिक्स लाइट। The mother crystal's just up ahead. Is it? I can't see a thing. Well, unless someone's moved it. अच्छा तरीका है, चीज़ मिल गया तो अपनी तारीफ ना मिलो तो किसी ने उसे हटा दिया। There's no one about. I knew it would be big. But this... Humongousaurus. There. That's our way into the inner sanctum. You'd think they'd have patched that up by now. A sorry state the Empire's in. Wait. You don't mean... Aye. My little game of hide and seek with Bahamut ended here. At tragic cost to this remarkable architecture. Don't blame me, he started it. But how did you make it out alive? I walked. You should try it. मैं बोला था ना, ये कभी सीरियस नहीं होते। Path of the Goddess. क्यों ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे कोई बॉस फाइट होने वाली है? Oh no. Them again. Is there something you two want to tell me? Maybe later. We need it. How could those creatures from Phoenix Gate be here in the mines? Are the two places connected somehow? और वो वाला कैसे? फिनिक्स गेट की तरह, ये की तरह, लेकिन आपस में जुड़े हुए कैसे हैं? इसका तो कोई सेंस नहीं बनते। मैं नक्शा नहीं खुल रहा। खैर अगर आगे नक्शा खुला फिर मैं आपको दिखाऊंगा। ये दो जगहें बहुत दूर है आपस में।
Thank you, Jill. Okay. This time. Don't let them get away. This time. Get him, boy. आई होप ये लास्ट हो गया फिर से वही स्टेज वाला धंधा शुरू और स्टेज के बाद दुश्मन. When I was in the Imperial Army, soldiers assigned to the Glass Gate would tell stories about something they called the Guardian. Can't say I saw anything like that when I was last here. Then again, I can't say I made it this far. Let's just be careful then. गार्डियन. तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे भी कोई बॉस फाइट मिलेगी आई गेस, क्योंकि सिड के सिडनी क्लेफ के मुताबिक कोई गार्डियन है जो इसकी हिफाजत कर रहा है. देखिए. ओके. Where did that come from? ये कौन सा If I गार्डियन? had to guess, दैट इज द गार्डियन. गार्डियन को छोड़ के Poor beast. Another victim of the flood. गैस ग्राफिक्स को देखो. if it's a fight he wants, Ready, Clive? Always. Okay, shit trigger. Careless. There, boy. A little help.
Where's he off to now? Clive, look out! Holy! Better already. सही. हाँ चले गए. आप भी जाओ हेल्प के लिए. Okay, finally. Are you all right? Fine. The inner sanctum lies just beyond. Chances are the palace guard knows we're here. We should move. Not that any sane commander would send his men into a place awash with this much ether. Clive. If this all works, and the blessing fades, things are likely to get worse for our kind before they get better. Being the last to wield ether will make our talents that much more sought after, by which I mean hunted. I just hope, in the end, they'll see that we didn't have any other choice, that it was the only way to get us to a better place. And here I was thinking I was the uncertain one. Luckily, 2 out of 3 of us have faith in you.
then it all starts here. Time to earn that menacing title. Sid the Vicious, was it? ओके गैस मैं सेव कर लूँ इससे पहले कि ओके लेट्स मूव ऑन आई मीन गाइस एक बात तो माननी पड़ी कि आर्टिस्ट को सलाम है यार बैठ के जो ये चीज़ें बनाते हैं दोनों हाथों से सलाम है We're almost there. Anyone having second thoughts? Not me. We're with you to the end, Sid. Then what are we waiting? ये मदर क्रिस्टल जिसके बारे में हम इतना सुन रहे थे शुरू से मदर क्रिस्टल मदर क्रिस्टल मदर क्रिस्टल ये आ गया मदर क्रिस्टल Beautiful. The heart of Sambrek. ओके Well, that didn't work. I think we're gonna need a bigger sword. Mine's bigger. Thank you, Clive, but I meant that figuratively. The core's clearly made of sterner stuff. Taya's going to have a fit when she hears about this. Stand back. It's about to get cramped in here. क्या करने वाला है सिड अपनी बलि तो नहीं देने वाला लग तो ऐसी रहे ओके ट्रांसफॉर्म That's more like it. Clive, look. ये क्या है पोर्टल खुल गया है क्या Sid! होली ये क्या चीज निकल रही पोर्टल में से ओह Ifrit. I need Ifrit. Come to me. I can't do this without you. Not again. Where are you? Hold on. ये है क्या चीज जो पोर्टल से निकल रही
ओ फिर से नहीं. Where the hell am I? ओ तेरी. I've been here before. You again. Where are you? What do you want? Fuck. It's still alive. Well, it's bad for us. Get out of my head! I don't answer to you. I'm leaving, one way or another. Not this time. What else can he do? Holy düşman. That power isn't yours. ये है क्या चीज़? न इसका नाम का पता है न इसके काम का पता है, बस मुफ्त का लगा हुआ है. But this is mine.
Let's go. I remember now. I am fire. I am Ifrit! आजा बच्चे. Melee attack, range attack, evade, jump. Press triangle after executing a fire burst. Use circle sprint over the distance. Hold the circle to lengthen sprint duration and use L to the direction. Okay. All abilities will embody Ifrit can confirm on the ability tab in the main menu. क्या हुआ अपने साइज वाले से लड़के हार मान ली It's done. ये क्या How many more could there be? ये क्या इसने मुझसे पावर चुराई है क्या वाह ये क्या As you wish.
come on. Hellfire. Is the free down और क्या हो गया? हिलफायर का वो अटैक कहाँ चला गया? गैस ये वाला सीन मुझे इतना पसंद है जो अटैक इंटेंसिटी को तो बढ़ा देता है. टाइफून वैंक्विश्ड. टाइफून था क्या? आया कहाँ से? किस रेल्म का था? बस पोर्टल खुला और टाइफून हाजिर. इस सर पैर भी होते किसी चीज के यार. इफ्रीत और क्लेव की जोड़ी अभी जचने लगी है क्योंकि ये इसकी कंट्रोल में आ गई. उससे पहले मज़ा नहीं कर रहा था लेकिन अब यस. तो इफ्रीत के कहने का मकसद है कि वेसल जितना ताकतवर होगा उतना ताकतवर ही इफ्रीत होगा. सिंपली 1 = 1. Enjoy your nap? You're wounded. This? It's only a scratch. All right, the hole. We'll find you a healer. Here? No, you won't. I know who you are. And if you think I'm gonna let you have him... think again.
अच्छा तो वो आवाज़ इसकी थी जो हमारे हेड में 24 घंटे गूंज रही होती थी. Sid. One left. That'll do me. ये चरसी गंजेड़ा सिगरेट नहीं छोड़ेगा, मर रहा है. Try not to talk. Clive. For so long, I thought I had all the answers. But then I met you. And I learned it wasn't a good death we should be fighting for, but a better life. It's all very well, a man reclaiming his fate. But if he can't choose how he meets it, what's the point? So, I made a choice. ये अपनी पावर्स खुद इसको दे रहे, जैसे गरुड़ा की लिखती. Your hands. The crystal's blessing is a prison, Clive. And if it's an outlaw the world needs to help it break free. Stop. Please. I can think of none better than you. अब ये फिर कौन आ गया? In ashen grip, let ember glow, to kindle flames anew. ये यार मैं तो इसे जोशुआ समझ रहा हूँ, ये पता नहीं कि ये हो कौन. ठीक है, सर बेहोश हो गए. I'm sorry, Clive. Had I arrived but a moment sooner. Do you remember me, boy? I saw you protect them. That was very brave. I know you're there, Ultima. You have learned our name. What else have you learned, Phoenix? My travels have revealed much about you and your ambitions. I know that it was you who tore me from my brother.
तो ये जोशुआ ही And I है। know that it is his power that you seek. But know this. If you want him, you'll have to go through me. Very well. Breath of mine ancestors, fill these lungs that I may dispel the songs of suffering. A disturbance. We'll leave. My brother alone. This is getting us nowhere. We agree. No more games, Phoenix. We have come to claim our vessel. And I said no. These flames are nothing. You will know what it is to burn. Yours is a fleeting form. I'm not fool enough to think I can harm you. But to protect my brother, I don't have to. Joshua. मैंने यस मुझे पता था ये जोशुआ ही है क्योंकि इसके फेशियल फीचर्स उससे बहुत मिलते थे और फाइनली ये जोशुआ ही These are निकला। not flames of destruction. Have you forgotten already who I am? Just try and get to my brother now. Fiend. ले क्रिस्टल की तुम बहने को हो गई। जोशुआ, हाँ तो जोशुआ जिंदा है और क्लाइव की बजाय जोशुआ क्लाइव की हिफाजत कर रहे।